ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्र विनियोगः। ॐ अस्य श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्र मंत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिं क्लीं कीलकं मम सर्वक्लेशपीडा परिहारार्थ सर्वदुःख दारिद्र्यनाशार्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं च श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्र पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूलपद्मचक्रगदाधरां पीताम्बराधरां देवी नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरी देवी ध्यायेत् बालकुमारिकाम्। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओंकारलक्ष्मी रूपं तु विष्णुहृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमक्तव्यं हीङ्कारबीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दनीं भद्रां सत्यानन्ददयायिनीं श्रीदैत्यशमनीं शक्ति मालिनीं शत्रुमर्दनीं तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणीं ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री कालिकारूपशोभिनीं अकारे लक्ष्मी रूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकार परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव अष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मी द्वादशादः हंसवाहनी इत्ये स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नरः सर्वपापभयो मुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मुच्यतुष्टयं पंचमासं च षड्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्य
मुच्यते सर्वकलविखेः दारिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धनो यशस्वी शत्रुघ्नो वहिनी चौरभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्वव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिना हितकारकं स्तुवन्तं ब्राह्मणं नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी।